Hello, hello everyone. Welcome all. Welcome to Odisha Civils. आशा करछि समस्त बहुत भलरे थिबो आज गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक्स फंडामेंटल्स इन अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजी जियोलॉजी जदि हमें देखिबा कि जियोमॉर्फोलॉजी जोटा तमर अछि जदि हमें देखिबा कि जियोमॉर्फोलॉजी तमर जदि ऑप्शनल हमें देखिबा इट्स एन वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली कोन हुए पेपर 1 तमर जो अछि दैट इज बेसिक्स फाउंडेशन माने बेसिक्स फंडामेंटल जदि सेटा तमे क्लियर रहउछ देन पेपर 2 इज वेरी इजी एंड पेपर 1 भी लेटर ऑन से पार्ट बहुत इजी पेपर 1 रो जो तमर अछि जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट दैट इज वेरी इंटेंसिव एंड आल्सो एक्सटेंसिव एज वेल आल्सो बहुत जगह रे जानिया पड़िबो कांसेप्ट ऊपर तो आज सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज बेसिकली जदि हम जानिबा कि व्हाट डज इट मीन इट साउंड सम पिकुलियर अभी तो स्प्रेडिंग जानछन पुनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग पुनी कोन सो बहुत भलो गोटे कांसेप्ट नॉर्मली जदि हम देखिबा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग ता हुए कोठी ऑफ कोर्स इट्स एन जदि डायग्राम देखछो इट्स एन बेसिकली ओशियन फ्लोर ऊपर हला सी बेड और ओशियन फ्लोर ऊपर अगेन द क्वेश्चन इज दैट को जगह हुए को जगह हुए ओशियंस रो माने को जगह रे तमे पाइबो कि ओशियन सी फ्लोर स्प्रेडिंग ता means I mean whether it is Pacific, whether it is Atlantic, whether it is your Indian Oceans or other parts. जदि हमें political देखो, so let us know. जदि हमें ता पूर्व जानिया पूर्व किसी जानिबा सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऊपर हला बहुत भलो टॉपिक ता आज आई होप एटा जानला परे बहुत जगह तमरो क्लियर हो जाओ एटा जानला परे बहुत संगरे आ संगरे इंटरकनेक्टेड तमरो थाय जियोमॉर्फोलॉजी राइट सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखिबा तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कांसेप्ट जदि हमें देखिबा C4 spreading concept theory is a fundamental concept basically which explains the creation and the lateral movement of the oceanic crust basically it talks about the creation and the lateral movement of the oceanic crust केमती oceanic crust ता theory होची sea floor spreading basically ए जिंसरा कहे जदि तुम डायग्राम देखुछ how it creates right कि basically the creation of the creation of the oceanic crust है creation of the oceanic crust ता माने यहाँ पर क्वेश्चन उठची क्रिएशन जदि होची ता माने इट मस्ट बी न्यू वन निश्चित रूप नुआटे थिबो ताले पुरानाटा क्वाड छी जदि नुआ क्रिएट होची ओशियन क्रस्ट तयारी होची ताले डेफिनेटली द ओल्ड वन थिबो गोटे ओल्ड क्रस्ट थिबो ताले सेटा गला क्वाड ताबी आज हम जानिबा जदि डायग्राम रे हम देखिबा एठी so this is just look at here this is your sea floor spreading just look at here this is your sea floor spreading au eti jodi tame dekhucho right this is mid Atlantic region likha heichi then if you go here this older crust then younger older then there is some continents just look at here and we'll again proceed further right just statically mark karo the mid oceanic regions आगु बढ़िया the theory provides basically the theory provided the it was की करथिले it was first proposed by Harry Hess in 1962 he is basically an American geologist Harry Hess हैला एटा परीक्षा रे भी पचारन प्रीलिम्स रे पचारन जदि तमे देखिबो क्वेश्चंस से माने पचारचंती जियोलॉजिस्ट को ऊपर बेसिकली हु इज द प्रोपाउंडर माने की करथिले जेमति तमे मु कहबी कि जेंति लास्ट मु हमें पढिथिले प्लेट टेक्टोनिक्स रे जेंति डब्ल्यूजे मॉर्गन थिले ओके तो सेही भलिया प्लेट टेक्टोनिक्स ऊपर थ्योरी पब्लिश करते सेमति हैरी हेस ही इज बेसिकली हैरी हेस राइट हैरी हेस एंड he talks about the sea floor spreading he was the first person who talked about the sea floor spreading अच्छा आगु जेबा this theory provided the missing जदि हमें देखिबा कि 1962 मसारे हेता माने लेटर ऑन वर्ल्ड वार 2 पर एक्चुअली देखियो मैक्सिमम जो इनोवेशंस हेची आई मीन हाइपोथेसिस जो बाहरी छी ना इनोवेशंस हेची इट इज मैक्सिमम वर्ल्ड वार 1 पर ही मैक्सिमम राइट हैरी हेस के परे जदि हम देखिबा कि ए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कांसेप्ट है को ग्राउंड रे आसीला फर्स्ट थिंग एक्चुअली आंसर लिखला बेले हमें सब ऑप्शनल बहुत गोटे मेजर पॉइंट मिस करू हमें सब बेले भाबू कि हमें जीएस टाइप रे लिखि देले मिलिबो नो एब्सोल्युटली नॉट जीएस टाइप रे
तो तुम लिखो सेमती कैजुअल आंसर भी कैजुअल तुमरो स्कोर भी तुमरो सेमती कैजुअल रहइबो तो लिखला बेले तुम टिके इंटेंसिफाइड लिखियो जेमती नॉर्मल इफ यू गिवन द सब बेले ट्राई करिवो ऑप्शनल लिखला बेले कि तमे सब बेले विल गिव द नेम ऑफ द जियोलॉजिस्ट जे बाहर क्वेश्चन थ्योरी हाइपोथेसिस थ्योरी बेसिकली हैला बहुत जगह किसी थाए तुमरो माने डेकोरम थाए if you miss that ornamentous then definitely you have to one has to pay definitely pay करिया पड़े अच्छा आगु बढ़िबा कि को कॉन्टेक्स्ट रे सी फ्लोर स्प्रेडिंग ता आसिला को कॉन्टेक्स्ट रे जदि हम देखिबा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग बेसिकली इट इज immediately after the your जदि डेवलप हला दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जदि हम देखिबा कि किए करथिले अल्फ्रेड वेगनर भला भी बुझो मु कोन कहली कि इट वाज इमीडिएटली डेवलप्ड or means I mean it was started developing after the continental drift theory एटी कोन कहली कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैला सी फ्लोर स्प्रेडिंग theory okay theory and was developed after continental drift हैला continental drift theory हम जानछंती एटी किए वेगनर्स continental drift theory वेगनर अल्फ्रेड वेगनर्स जो थिले साइंटिस्ट ओके वो ऑलरेडी अल्फ्रेड वेगनर को ऊपर क्लास नहीं था अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी पर डेवलप हला नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई अल्फ्रेड वेगनर जदि तमे मन पकेबा में अल्फ्रेड वेगनर टॉक्स अबाउट द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग किंतु केमती हाउ इट इज मूविंग दैट एक्सप्लेनेशन इज मिसिंग मन रखो सी तो कहितले कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग ओनली कॉन्टिनेंट्स he doesn't talk about the the oceanic plates he was only talking about the plates which are continents जदि हमें देखिबा कि plates actually दी टाइप रे थाए गोटे हला continental plate आ गोटे हला oceanic plate so Wegener was missing or he was silent about this the movement of the oceanic plate but ए जो explanation टा हला सेटा ता परे सेति पे तमरो sea floor splitting टा डेवलप हला means I mean this theory was the intensified in so many research studies are the intensified because of this the missing points of the Wegener's many explanation points jiba badiyo the theory provided the missing explanations on the mechanism of the Alfred Wegener's continental drift theory Alfred Wegener's continental drift theory missing is that is why it was developed sea floor spreading explains the widening of the pond करे sea floor spreading जदि देखिबो it explains the widening of the ocean basins basically ocean basin केमते widen होची the formation of the mid-oceanic ridges formation and the recycling of the crust or हला crust at trenches इत्ते बड़ बड़ जिंस कवर होची कि widening of the ocean basin रो widen हवा and formation of the mid-ocean ridges हैला mid-ocean ridges formation जो हैला how recycling one by one जानिबा just look at here हैला formation of the mid-ocean ridges this is mid-oceanic ridges this mid-oceanic ridges it देखो तमे mid-oceanic ridges then trenches भी जदि तमे देखिबो trenches this हैला trenches भी one by one आगु देखिबा आगु जदि पुनी देखिबा basically हैला एटा गोटे पुनी म आसी डायग्राम को basically the sea floor spreading the theory is geological concept जदि हम देखिबा कि actually कि sea floor spreading concept is basically an geological concept हैला basically an geological concept explain how new oceanic crust forms केमति कोन एक्सप्लेन करे it explains how the new oceanic crust forms at mid ocean ridge and moves laterally away from the ridge ठीक अछि तो देखिबा कि केमति laterally माने फॉर्म होची न्यू ओशियनिक क्रस्ट केमति सब इंपोर्टेंट देखो एटी न्यू ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होची एंड एट मिड ओशियनिक रीजेस एंड मूव्स लैटरली अवे फ्रॉम द रीज जदि तमे एटी देखुछो जस्ट लुक एट द मैप हियर मिड ओशियनिक रीजेस इज हियर एटी तमे देखो दिस इज योर मैंटल कन्वेक्शन एटी होची मैंटल कन्वेक्शन होची माने मैग्मा these are nothing but your जदि हमें देखिबा कि these are nothing but your कलर टा चेंज करछि हैला these are nothing but your magma this is your magma if you see this is your magma right this is your magma hela par tame kon dekho this is your continental crust and this is your oceanic crust a part right this is your oceanic crust
this one is your oceanic crust, correct. Oh, just it mark करो there is an spreading एटी तमे देखुछो this is spread होची this is you know spreading जेमति हमरो you know जेमति हमरो spread होची हमरो muscle spread होची सेमति exactly in the same manner ocean floor रे भी spread होची just look at here this is right this is your subduction zones smooth diagram करली आहुरी तुम better बुझी हबो and these are the things where the you know this is your mantle convection is there right so let us know so basically the sea floor spreading कौन कहला हमको कि the it's a new oceanic crust form होचे at the mid ocean ridge and moves laterally away from the ridge ऊपर ridge रू समाने away हे होता हैला as magma rises जदी actually होची केमती magma जेतले तुमर ऊपर को उठिला when it rises up so कोन हबो से laterally spread करियो laterally माने horizontally in opposite direction spread करियो so spread कले that gives an impact force को से apart करियो means I mean the spreading को से apart करियो so of course that gives you know widening so एठी हम देखिबा the magma rises from the mantle हैला जदी तमे निजे देखो magma एठी rise कला suppose magma rise कला कि एपट को lateral development हबो spread करियो definitely spread करियो right so mantle and solidifying it creates a new basaltic crust basically it creates a new basaltic crust right and which gradually pushes the older crust outward जोटा formation older crust हे से कोन हबो धीरे धीरे gradually ताको outward push करिवो right and the older crust eventually recycled so जो crust आगुरु थिला older crust that eventually कोन हबो that pushed away eventually recycle into the mantle at the deep trenches एठी मु बुझौछि older crust just look at here या पूर्वरु जेतले न्यू crust एटी formation होला these are the magma right these are your hot magma these are the magmas right these are your magma जेतले बाहर को आसी form हैला so what happens older crust जोटा अछि सेटा कोन होबो हैला already heavy अछि माने old अछि and heavy अछि gradual then से कोन होबो ता ओजन रे ग्रेविटी रे से subducted हे जिवो माने जदि मु डायग्राम ता बने it is like this one if you see the older heavier crust एटी भला में देखो the older heavier crust is subducted right it move cross kali right this is your older heavier crust older heavier crust subducted कहा थरे subducted ला newly formed जोटा already जो एठी जो तमरो already mentality जाओ sorry एठी तमरो magma formation हला just look at here एठी तमरो magma formation हला एठी मु color change कला और डायग्राम कले होई जिवो एठी magma already तमरो form हला magma already formation होची तळु right magma एठी मु लिखली magma भला भी बुझो एठी हला जदी खाता पेन धरिचो भी करिने तुमका और बेटर लागिवो magma spreading away जणी देखुचो magma spreading away तो magma जेतले spread करूची older crust अछि औ ये आपरे heavy वाला new crust so it is subducted this one is your subducted plate ठीक अछि this is subducted under new crust हैला new crust कोटा old plate older plate इट में लिखली older plate this one older plate में लिखली older plate or crust जोटा सेटा ता तळे दाबी हे गेला right older plate so that is what is here subducted under so normally जेतले ए plate ता कोन हबो एटी गोटे fractures हबो ना fracture occur एटी कोन लिखली डायग्राम एटी कलर चेंज कला और तुमको बेटर लागिवो right fracture मुझे लिखि दउची fracture occurs hence your earthquake generates जेतु फ्रैक्चर हला तमर कोन हो earthquake generate हो एई जगह हला एई फ्रैक्चर जगह सो नाउ अगेन कम टू द पॉइंट एटी के मैसेज को जगह रे हुए ताबे हम जानिबा सो एटी हम देखले कोन इवेंचुअली रिसाइकल इनटू द मेंटल एंड डीप इनटू द सी फ्लोर एटा भांगी की कोठी पड़ेला भांगी की पड़ला तमर कोठी जो तुम देखुछो मेंटल भीतर एटी भांगीला जोटा हला एटी प्लम इनटू द मेंटल डीप इनटू द मेंटल हला एटी मु कोन लिखली deep into the mantle हला कोन हो
पुणी रिसाइकल हो पुणी तरलिबो तरलिक पुणी मागमा जीवो पुणी तयारी हो सो इट इज बेसिकली ए कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लेट भांगी की गळे पुणी मेंटल भितर माने अपर मेंटल जोटा कि तमरो कुआ जे एस्टेनोस्फियर रे पुणी मेल्टिंग पुणी मागमा ऊपर उठे पुणी नुआ क्रस्ट बने पुणी नुआ क्रस्ट पुणी again old crust to the your it's because of the heavy thickness again it's subducted because of its own weight and impact of the gravity this is the fundamental you have to be eta lekhila bele you do not miss this solid points otherwise it creates it's less than your score definitely बहुत जगह में देखिए लेखिला बले अंडरलाइन कहीं करूनो अंडरलाइन करवाटा ही बहुत जरूरी otherwise you cannot get score माने भलो रही परिबो अच्छा बर्तमान डायग्राम रे होप इट इज क्लियर केमते तमरो मैग्मेटिक करंट आउ मन रखो दिस इज ए जो कन्वेक्शनल जोन सेठी मु लिखि दोछि दिस इज योर एस्थेनोस्फियर टू बी वेरी क्लियर दिस इज योर एस्थेनोस्फियर right this is your asthenosphere right again asthenosphere is where asthenosphere is your at upper mantle post stage upper mantle it's not in lower mantle right so fundamental has to be very clear so eventually it is recycled and into the mantle and deep sea trenches driving plate tectonics ocean basin expansion and volcanic and seismic activity so eventually what are the associated parameters ta sangare kon hobo mane associated your happenings kon हुए seismic activity होबो seismic माने जो पाख एरिया रे होबो definitely those nearby places they felt the seismic jolt or seismic wave सेठी हुए seismic होबो definitely से जगह रे next जदि हम देखबा causes of the sea floor spreading now the come to the causes of the sea floor spreading definitely कौन causes very important causes जदि हम देखबा the causes of the sea floor spreading what are the major causes that matters or generally sea floor spreading taku trigger करे the sea floor spreading occurs due to the movement in the earth mantle re movement hochi because of that and forces are the tectonic plate boundaries and volcanic activity at ridges hala volcanic activity at ridges puni dekhiba few major parameters are discussed as follows number 1 kon what are the major parameters because of that one tomorrow sea floor spreading ta tomar trigger huए let us know mantle convection current प्रथम है mantle convection currents ता माने mantle माने कोटा को आउछ हैला जोटा कि तमरो molten हैला molten हमरो जो magma कथा कहउछ हैला that is your mantle convection currents actually hot mantle जोटा कहा जाय हैला hot mantle because जतला लाभार नॉर्मल टेंपरेचर थाए तमरो 2000 डिग्री सेल्सियस मु तुम कोन कहली लाभार टेंपरेचर ऑफ लाभा केते थाए पाखा पाखी 2000 डिग्री सेल्सियस माने कोठी at earth surface हैला at earth surface तमे भाबो जदि earth surface ऊपर 2000 डिग्री ता माने भितरे केते अधिका थियो right so normally hot mantle material rises at mid oceanic ridges जोटा हम देखले mid oceanic ridges that rises mid oceanic ridges rise ऊपर को आसे and cooler material sinks trenches driving the coastal movement आउ cooler material टा कोन हुए that sinks at the trenches right एटा गोटे factor गोटे ऊपर को उठला हॉट टा और तळटा कूलटा सिंक कला that is their जदि हमें देखिबा कि that is a tendency right hot टा सबले ऊपर को उठिबो और कूल टा सबले sedimented होबो माने सिंक करिवो then ridge push second one is your ridge push देखले elevated mid oceanic ridges हैला elevated mid oceanic ridges कोन हुए push the newly formed crust outward due to gravity हैला due to gravity newly crust को ताको outward push करिवो माने mid oceanic elevated जोटा उठिला धीरे धीरे कोन हबो हैला जदि तमे एठी देखुछ डायग्राम टा जदि न्यूली फॉर्मड हैला एठी हैला सपोज एठी देखलो कि न्यू क्रस्ट सपोज लेट्स से इट्स ए न्यू क्रस्ट लेट्स से न्यू वन सो न्यू को कोन करिवो से पुश करिवो ठेलिबो धीरे धीरे एपड़ को ठेलिबो काहे कि बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी हैला काहे कि हुए एटा नेक्स्ट स्लैब पुल बेले बेले कोन हुए स्लैब पुल रे ओल्ड क्रस्ट जोटा तयारी हेता ओल्ड क्रस्ट हैला dense older oceanic crust sinks into the subduction zone जदि हम देखिबा कि dense older crust हैला dense और older crust sinks into the subduction zones pulling plates along plates को pull करे हैला pulling plates along हैला नॉर्मली जो प्लेट टा crust ऑलरेडी आगु बनी की अछि
सेटा कोन हबो धीरे धीरे जेते ओल्ड हबो तार कोन हबो मटेरियल ऐड हबो आ सेटा ता ओजन बढ़िबो जेतले वेट टा बढ़िबो तो से डेंसिटी बढ़ला वेट बढ़ला तापर कोन हबो धीरे धीरे हला डेंस ओल्डर ओसेनिक क्रस्ट सिंक्स इनटू द सबडक्शन जोन पुलिंग प्लेट सिलिंग जेहेतु से सबडक्शन जोन रे कोन हबो से पुल हे गेला माने तळकु कटि गळी पड़े से कोन करे आकु टाणी हला दैट इज व्हाट दिस इज द ओसेनिक फ्लोर टा केमती एटी सबडक्शन जस्ट लुक एट एटी ए जो प्लेट टा करिवो से कोन करिवो आकु टाणीबो निश्चित रूपे स्प्रेडिंग रो भी बहुत आइदर एपट को कि आइदर एपट को सबडक्शन जोन जस्ट फॉर एग्जांपल सो आइदर एपट को टाणीबो नले एपट को टाणीबो राइट बुझो जिंसटा हैला आ एटा मन रखो दिस इज योर सबडक्शन जोन ए जो थीटा मु लिखली दिस इज योर बेनिफ जोन ताको कहंती दिस इज योर बेनिफ जोन और सबडक्शन जोन बेनिफ जोन और सबडक्शन जोन राइट बेनिफ जोन और सबडक्शन जोन लेट अस नो right so next how come what are the other parameters that is your volcanic activity is also another major parameter volcanic activity kon huए rising magma at ridges है ना ridges रे जो rising magma होची that forms new crust right that forms your new crust promoting lateral displacement right it promotes your lateral displacement है ना rising magma at ridges basically okay forms new crust करे and promoting lateral displacement जेतले नुआ तमर volcanic activity होची of course volcanic activity जेतले तमर होची of course normally your magma accumulation हो ना magma accumulation से कोन हो हला new crust formation हो and new crust formation जेतले होची promoting lateral displacement again ठीक अछि new crust हला तो lateral displacement हो and it is clear from this map again new crust formation हला और laterally displace हो ये पडु जबो ये पडु this is what the theory says see geological theory बेल कोन वे ऑप्शनल रे माने लागे कि हमको बोरिंग लागे बट हम पाखरे किछि अलगा भी नाही स्कोरिंग पेपर तमर इमोशनल हबा किछि दरकार नै हमको बस फंडामेंटल कांसेप्ट बुझियार अछि लिखवार अछि मार्क आनियार अछि और एग्जाम क्रैक करियार अछि this is the objective so we need not to go for as a geologist we have to evolve the theories right okay so एठी हम बुझिले सेटा कि volcanic activity lateral displacement कला next tectonic plate interaction of the tectonic plates let's know interaction of the tectonic plates so divergent boundaries allow plates to separate so हमें last previous video रे मु से जिंसरा कहली plate tectonics से देखो कता interlinking so normally sea floor spreading concept जदी देखियो it is always divergent boundaries माने केमती plates are moving apart गोटे plates two plates they are moving apart गोटे एपड को जाउछ गोटे एपड जाउछ this is plate 1 and plate 2 right our sea floor spreading time this is your magma upwelling magma this is your upwelling magma right upwelling magma this is what भला भाबे बुझो एटी कोन बुझले टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन divergent boundaries means when plates are moving away from the each other opposite to each other सेही समय रे जिंसटा रहबो टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन and of course it triggers the sea floor spreading activity मन रखो कन्वर्जेंट बाउंड्री रे केबे भी sea floor spreading हुएनी it is always the divergent boundary एटी कोन लिखले divergent boundaries allow the plates to separate हुए so make easy for the spreading of the oceanic floor that is what you saw from this see from the diagram जेहेतु एटी डाइवर्जेंट फोर देइची हैला रिमेंबर जेहेतु एटी डाइवर्जेंट एटी मु कोन लिखली डाइवर्जेंट मोशन राइट डाइवर्जेंट मोशन ऑफ प्लेट डाइवर्जेंट मोशन ऑफ द प्लेट जेहेतु प्लेट रो डाइवर्जेंट मोशन अछि राइट दैट इज व्हाट हैला तो स्प्रेडिंग हैला सो भूल रे भी जदी एग्जाम होले तो सब ठीक गला कन्वर्जेंट लिखि देला गला सन हैला एग्जामिनर को ये पता लगे कि नहीं ये कांसेप्ट आर बहुत अच्छे हैला नेक्स्ट तो होप इट इज क्लियर नेक्स्ट हमें जीवा पुणी अच्छा ता पूर्व आ गोटे डायग्राम देखौची जस्ट लुक एट हियर ए डायग्राम तमे कोन देखिले ए डायग्राम में कोन देखिले this diagram shows dita continent अच्छी just look at here the continent is your South America continent आउ एपट जदी देला अफ्रीका कंटिनेंट आज जदी तमे देखिबो फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका आउ अफ्रीका जदी हमें देखिबा कि वेगनर हाइपोथेसिस को जी बिकॉज़ ऑफ यू नो मोटिस टेंडन जॉइंट और द जदी हमें देखिबा कि जिक्सॉफिट जोडा को आ जाए साउथ अमेरिका और अफ्रीका बिकॉज़ दे आर नाउ सेपरेटेड
because of the sea floor spreading. And जदि हमें देखिबा कि during the Mesozoic era हला जदि Mesozoic era रे देखिबा कि से माने सॉरी जदि हम Mesozoic era रा yearly Mesozoic era से split हेले Paleozoic time रे से माने एकाठी थिले जदि तमे actually जदि देखिबो मुडी करूची right this is your Africa, let's say I'm talking about this Africa, right, this is Africa ଆଉ South America जदि मु कहूची right South America coast जदि मु नोची right South America, right, so ei jo jinsata once upon a time this is your South America and this is your Africa, so Africa South America gote time re emane gote single thile, they are the single one aji se mane alga alga kemti hele because of the sea floor spreading activity, so we can say in jodi interview tam pacharabe due to the sea floor spreading activity South America got separated from Africa or vice versa, and of course that is the creation of that paves the way for the creations of the Atlantic Ocean, such a huge one Atlantic Ocean, right, so it ame kon janle Wegener ko theory Wegener ro jigsaw fitting hela jigsaw fitting mane paka these are the very fundamentals I am telling about jigsaw fitting that talks about the Alfred Wegener's hypothesis hela Wegener's theory ru eta tame janchu Wegener's theory jigsaw fitting correct अच्छा सो बर्तमान एत कथा तो हमें जानले कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉजेस कौन हैला केमती हैला हमें जानले बर्तमान एविडेंस कौन लेट अस नो दैट देयर मस्ट बी सम एविडेंस दैट normally which establishes our argument एते कथा जो हमें डिस्कशन करले हैला लास्ट 25 मिनिट्स रा बर्तमान हमरो एविडेंस कौन हमें जानिबा व्हाट आर द एविडेंस दैट हैला जानिबा इना एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन एविडेंस लेट अस नो राइट एविडेंस कोची radiometric dating है ना radiometric dating जोड़ा करा होचे radiometric dating shows that rocks at mid-oceanic ridges है ना mid-oceanic ridges जो rocks होची that are youngest basically radiometric dating रू actually normally age जाना पड़े जेंति मु कहबी कि जदि हमें देखु छु गोटे सी ओशियानिक ट्रेंच रे पैसिफिक ओशियन रे गोटे सी क्रेचर माराइन सी क्रेचर मिलला कि गोटे वोल्केनिक रॉक मिलला ताको रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी तार एज जणा पड़छ कि एटा आज 150 मिलियन इयर्स परे पूर्वरु कि 200 मिलियन से पूर्वरु कि 250 मिलियन इयर्स पूर्वरु दैट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाय so that it is talks about the age hela talks about the age hela we can calculate the age calculations hela basically age calculation rocks mid-oceanic ridges are youngest मैं जान ले so while those farther from the है ना जोटे कि farther मान दूर रचन from the ridge are older example the Atlantic Oceans ranges from 0 to 180 million years ता माने 0 to 180 million years माने निश्चित रूपे Mesozoic era हमें जानि छन Mesozoic era eras are basically four just quickly man पके there are four varieties of era that is basically four varieties की जिवे four varieties रे your Precambrian, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic वर्तमान हमें अछन को ईयर young age era that is Cenozoic हैला गोटे क्लास मुने भी सेपरेट जियोलॉजिकल टाइम्स केला कहि दिबे सेतरे हैला सो शैलो अर्थक्वेक जदि हम नबा शैलो अर्थक्वेक सब जानले गोटे हैला एटे एविडेंस नंबर 1 एविडेंस 1 एटे हम कोन लिखली एविडेंस 1 सेमती एविडेंस 2 के एविडेंस 2 सेकंड टा कोन शैलो earthquake basically shallow earthquakes occur along the ridges basically shallow earthquake occur along the ridges due to crustal formation and movement jugu deep focused earthquakes occur at the trenches pakare deep deep tamara rochi deep focused earthquakes are the trenches where the subduction recycle old crust so normally जदि तमरे केतरा स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन भी पचारला प्रीलिम्स रे हला सबले एटा देखो मेंस रु सबले केमते प्रीलिम्स जिंसर तमे करियो एटा भाबी से जो ऑप्शनल मु सेदिन भी कहतिल ऑप्शनल इज वेरी एडवांटेजियस ज्योग्राफी ऑप्शनल जिंसर नेले तुम बहुत गुडे जगह रे तुमको तमरा क्लैरिटी रहबो एडवांटेज मु बहुत आगरु भी कहिछि एंड सी माय ओनली मिशन इज टू टेल यू द ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिव इज टू सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम दैट्स इट सो ओल्ड जनरल जदि देखियो न्यू क्रस्ट और ओल्ड क्रस्ट रे मन रख सब बेले न्यू क्रस्ट रे सब बेले तमर कोन हुए शैलो अर्थक्वेक हुए माने अर्थक्वेक ता बेसी रिचर स्केल बेसी अधिक नथिबो आइदर 4 5 एमती थिबो बट ओल्डर क्रस्ट रे तमरा फोकस्ड है डीप माने अर्थक्वेक रो जो फोकस्ड है और डीप थाए काहे रीजन इज व्हाई हाउ यार रीजन हला यंग न्यू क्रस्ट जो था यंग थाए तार मास ता कम थाए माने डेंसिटी अपेक्षा तो लेस थाए
but the old one since it is heavier thicker, so thicker जो कौन हुए से टक किना भांगे ता भीतर कौन हुए deep impact टा बेसी पड़े because of its heavy mass and density. So that is why your deep focus बेसी होता है in compared to the new crust. So earthquake टा बेसी जदि देखिबो older trench रे माने older crust रे बेसी feel हुए तमरो माने तार magnitude टा बेसी थाए in compared to the new crust. I hope it is clear, right? So deep focus earthquakes occur near the trenches where the subduction recycles the older crust. Recycles होचे again recycle मुकोची भांगी की again asthenosphere रे माने upper mantle melt होचे asthenosphere again पुनी magma upswell होचे पुनी new crust बनची पुनी new crust addition है कि पुनी old crust होचे हैला धीरे धीरे eventually then again it melts. So that is called recycle. That is a cycle sea floor spreading. Evidence number 3 जोड़ा हम देखिले evidence, right? Evidence 3 कौन from the deep sea drilling जेतले रशिया रे तमर ड्रिल होचे हैला deep sea drilling programs होची shows systematic increase in the crustal age. There is a systematic increase in the crustal age रे systematic increase होची, right? Systematic increase in the crustal age with distance from the ridges and confirm the sediment accumulation patterns करची providing direct verification of the seafloor spreading. केमती हैला shows a systematic increase in the crustal age. जेतले तमर धर मुझे कहली कि कोला पेनिनसुला ठीक अछि कोला पेनिनसुला एटु मैं एग्जांपल देली भला बेटी जाना रशिया ड्रिल्स हैला रशिया कोन करछे ड्रिल्स कोला पेनिनसुला for oil drilling crude oil drill हैला crude oil drill करछे रशिया कोला पेनिनसुला रे crude oil drill करछे crude oil खाली crude oil no for your crude oil and natural gas दुटा पाई रशिया करछे crude oil और natural gas पाई तो सेही समय सेठी भी साइंटिस्ट माने जियोलॉजिस्ट माने they they examine the crust तो सेठी समय कोन देखुचंती ridges and confirms the sediment accumulation patterns providing direct verification of the sea floor spreading. सेठी सेतले समय देखुचंती हला crustal accumulation direct sea floor spreading रो समय सेटा पाउचंती evidence normally. So this is what I mean कि number 1 प्रथम हला तुम्हारा radiometric dating रे Atlantic Ocean ने कहूची कि this is 0 to 180 million years old. Second रे कोड sea floor spreading कहूची कि तमरो deep जो earthquake होची deep focus रोची सेटा तमरो oceanic trench पाक रोची काहे कि because of your old crust that melts आउ न्यू क्रस्ट पाखरे तमरो शैलो फोकस रोची ता माने कोन ओशन फ्लड रोची बहुत कांसेप्ट मने वेरी डिटेल्स में तुम कहूची न्यू क्रस्ट पाखरे से माने देखुचंदी शैलो अर्थक्वेक होची माने बेसी डीप नो बट सेम जिंस ट्रेंच पाखरे देखुचंदी जोडी बहुत डीप फोकस रोची काहे कि ना ओल्ड ता मेल्ट हिच ओल्ड क्रस्ट ता मेल्ट हिच सो दैट इज द रीजन अगेन ता माने ओल्ड क्रस्ट ता हेवी ही कि तळकु गळी पडची माने मेल्ट ही हिची हैला और न्यू क्रस्ट ता एक्सपेंशन हिची. That means sea floor spreading. Evidence number 2. Evidence number 3 that मुदेली कि oceanic drilling oceanic drilling जोटा कि रशिया तार करछि कोला पेनिनसुला पाखरे ड्रिल करछि for the explore for the your extraction of your natural gas and the crude oil. That is what. So hope एई सब जिंस हमें पूरा टोटल पढिले हैला कजेस consequences टोटल हमें पढिले डीप फ्लोर ऊपर हैला सी फ्लोर स्प्रेडिंग केमती रहउची कजेस consequences पूरा हमें पढिले कोन को रीजन कोन कजेस रहला हैला एंड consequences also we have and evidence also and also we have discussed the consequences also. Consequences normally कोन हुए तमरो आइलैंड फॉर्मेशन में हैला आइलैंड्स छोटा आइलैंड्स जदि हमें देखबा कि यार या ऊपर जदि मैं कहबी कि कोन हमर रहिला हैला फॉर्मेशन कोन हुए फॉर्मेशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग फॉर्मेशन हैला फॉर्मेशन और consequences कौन रहे positive consequences. Let's say positive consequences of due to your sea floor spread जो करूची formation of the number 1 your mid-oceanic ridge same mid-oceanic ridge formation हला mid-oceanic ridge जोटा कि Atlantic रा number 1 number 2 रे islands formed
and that be habitable एटी कोन लिखली habitable माने लोक सेमते रहउछन फॉर एग्जांपल्स मु कहबी बर्म्यूडा हैला बर्म्यूडा आइलैंड एजोर आइलैंड हैला एजोर सब अटलांटिक रे ई माने बर्म्यूडा आइलैंड आउ माने अटलांटिक ओशियन तमे जे देखिबो माने सब अटलांटिक ओशियन हैला अटलांटिक ओशियन रे माने बर्म्यूडा आउ एजोर राइट सो सब जिन आज आम पढ़िले घर जाके नोट बन दो जहाँ भी पढ़ू घर नोट बन दो डेफिनेटली हेल्प यू आउट आउ एटा ऑप्शनल तो बहुत इंपोर्टेंट तुम अंडरस्टैंडिंग पे प्लस जीएस जो भी जिन देखु डेफिनेटली ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम सब एग्जाम तुम हेल्प बेसिकली तुम फंडामेंटल क्लियरेंस हम सब जिन को बुझे खास करके जियोग्राफी भाई इंपोर्टेंट सब्जेक्ट राइट आउ किछि इन्फो ता पूर्व किछि इन्फो आउ किछि माने अनाउंस करछि जोटा कि हमर optional batches aguru bhi kaicha optional batches already started both offline online hela you can text me over this one test series batch has started okay already started for charta mock test sorry even we have the that facility the one option we can again the start from the backlog to start there is no problem for that one you can adjust general studies batches also that is on the full swing also it has started okay so thank you so much thank you everyone so hope सेशन समस्त को इंटरेस्टिंग लगी थो घरे जाइए टिके नोट बनै दियो नोट डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट अगेन विल मीट विथ मोर इंटरेस्टिंग सेशंस हैला विथ मोर fundamental and new topics okay that is generally relevant for your competitive exams along with your civil services thank you so much thank you everyone have a good day jai jagannath thank you so much